Dr. Prashant, we can start. Thank you. Hello, doctors. Good afternoon. We cordially invite you to this webinar and welcome to this webinar on role of Oseltamivir in flu management. Today, our moderator is Dr. Kapil Rathi, sir. Welcome, Dr. Kapil Rathi. This program is brought to you by Hetero Healthcare, an innovative pharmaceutical company. Hetero Healthcare, the journey began in 1993. We have 30 years of excellence and 36 state-of-art manufacturing facilities, 300 plus products in portfolio, and presence in 126 plus countries. Hetero Healthcare has 21,000 employees globally and is the largest closely held pharmaceutical company in India. Hetero Healthcare is among the largest manufacturers of ARV, APIs, and FDFs in the world and has Asia's largest API manufacturing facility at SCZ Complex, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. For Hetero Healthcare is a 360-degree solution provider striving to fulfill unmet healthcare needs, reaching to customers across India with wide product range encompassing multiple specialties, pioneering in quality and innovation, and Hetero Healthcare has distinction of bringing 4 biosimilar products to market within 5 years of initiation. They are darbepoetin alpha, rituximab, bevacizumab, and adalimumab. During COVID-19 pandemic era, Hetero Healthcare, the pioneers in antivirals, offered Oseltamivir, Favipiravir, and Remdesivir to the patients, because of which in August 2020, Hetero Healthcare received an award of Pharma Excellence for COVID drugs. Today's webinar, role of Oseltamivir in flu management. We have got Dr. Kapil Rathi, as I mentioned, as our moderator. Dr. Kapil Rathi, sir, is medical director and consultant at My Health Clinic from December 2006 till date. Sir is working in general and critical care medicine for the last 19 years and well equipped with all general medicine, chest medicine, and critical care procedures. Sir has been awarded by Governor of Maharashtra for excellence in work during COVID times. Dr. Rathi is part of trials for MNCs and National Pharma and phase 2 and 3 trials, working with various NGO for health awareness by conducting camps, and fellow of infectious disease by IDSA, member of ERS, ATS, ACP, IDF, ADA, RSSDI, and ICP. Dr. Kapil Rathi has held multiple positions in various bodies. With this brief introduction, I welcome Dr. Kapil Rathi to this webinar, and over to you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Prashant. Thank you, Hetero, for this webinar. And I welcome all the delegates who have logged in this, Friday afternoon. So today what we are going to talk is about empirical use of Oseltamivir in flu management. Next slide. So हम आज क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लू के बारे में समझेंगे. What flu is, what are the complications of flu, what are the clinical evidences to use Oseltamivir, and also what guidelines is. तो ये सारी चीजें हम शॉर्ट स्पैन में समझेंगे और इस बात पे ज्यादा ध्यान रखेंगे कि हाउ टू यूज एंटीवायरल. There are something called as antivirals which are there in the market, and how we can use best over practice in our day-to-day clinical practice. That is what we are trying to see. Next slide. So let's come to the flu and the health related challenges in monsoon. So there are 4 or 5 types of the illnesses or viral illnesses which are very common in our practices, not only in monsoon but across the year. One of them is most commonest is influenza-like illness or H1N1, which is the crux of all the viral illness what are there in the upper respiratory tract infections. And obviously there will be some kind of severe acute respiratory illness or ARDS, and there will be COVID-19. COVID-19 is not too much nowadays, but it was there as we all know. Next slide. So if you see Indian data, right from 2017 till 22, the cases of flu has been going up and up, except in 2021 and 22 where COVID was predominant. So जैसे ही केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी डेथ बढ़ेगी, क्योंकि केसेस जितनी ज्यादा केसेस रहेगी उसमें से कुछ केसेस सीवियर होंगे and they ultimately cause death. Next slide. So if you see overall influenza in India, right from 2015 to 2019, cases are going up in at least 3-fold times. 3 गुना केसेस हर साल बढ़ती है और उसी के अनुसार उसके डेथ भी बढ़ती है. So that is what is the data is. So the deaths and infections both are rising in India, which is alarming. इंडिया में क्यों बढ़ती है? बिकॉज इंडिया के अंदर में 3 प्रकार के क्लाइमेट्स होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट होते हैं. हमारे पास में कोस्टल लाइन भी है, हमारे पास में हिमालयस भी है, हमारे पास में डेजर्ट्स भी है. तो हमारे पास में बहुत सारा वेदर होता है जिसके अंदर में फ्लू बहुत ज्यादा कॉमनली फैल सकता है. दैट्स व्हाई वी गेट लॉट ऑफ फ्लू. नेक्स्ट स्लाइड. So types of influenza virus, we have got 4 types of influenza virus, A, B, C, and D. C and D are very mild and they don't infect human beings. Mostly they infect animals and mammals. But influenza A and B are very common. Out of that, A is the most commonest influenza what we get in our practice. लगभग 60% इन्फ्लुएंजा जो होता है नॉर्मल व्यक्तियों को या जिनको भी होता है एक कम्युनिटी में, वो इन्फ्लुएंजा ए होता है. 30-40% इन्फ्लुएंजा बी होता है और कुछ लोगों में इन्फ्लुएंजा बी दोनों भी कॉमन होता है.
तो दिस आर मेन इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंजा ए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा पैंडेमिक पूरी दुनिया में ए के वजह से होता है, जिसके अंदर में वेरिएशंस होते हैं एंटीजेंस में, जिसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। इसके वजह से ही पैंडेमिक आता है। आप चाहे जो भी पैंडेमिक उठा के देख लो पिछले 100 सालों में, सारे कुछ आपको जो इन्फ्लुएंजा के जो पैंडेमिक हुए वो ए की वजह से हुए। चाहे वो एवियन हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, एवियन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, चिकन फ्लू हो, जो भी हो, दे ऑल आर इन्फ्लुएंजा ए वायरस। नेक्स्ट स्लाइड। सो हाउ डज इट ट्रांसमिट? जैसे कि कोविड ट्रांसमिट होता है, जैसे कि बाकी वायरसेस रेस्पिरेटरी वायरस ट्रांसमिट होता है, उसी तरीके से आपका फ्लू वायरस भी ट्रांसमिट होता है, जस्ट बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ड्रॉपलेट, हैंडशेक, कॉफिंग, स्नीजिंग, सिटिंग टुगेदर, having, so you have to keep all the precautions what we used to take during our COVID times. Same precautions need to be taken here. The good part or the bad part rather I should say is that virus is active up to 5 days in your body. So incubation period उसका 5 से 7 दिन रहता है। उस दौरान अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति के संबंध में आता है या उसके नजदीक आता है, तो उसको भी फ्लू होने के चांसेस होते हैं। सो इन्फेक्टेड मैन कैन स्प्रेड वायरस टिल 5 or 7 days of infection. That is most important. Next slide. So there are a lot of differentiation between all, ILI, H1N1, सारी and COVID-19, लेकिन differences बहुत subtle है, बहुत छोटे छोटे, जो शायद हम ओपीडी में नहीं पकड़ सके। लेकिन जो पहले 5 सिम्टम होते हैं, लाइक फीवर, माइल्जिया, कॉफ, लैक ऑफ एनर्जी और सोर थ्रोट, ये हर वायरस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरस के इन्फेक्शन में आपको मिलेगा, कॉमन है, बिकॉज दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन। ऑल दिस मलेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आर वेरी कॉमन। H1N1 में you can get a lot of tachycardia, tachypnea, and probably short of breathness. कोविड में हमने देखा कि एनोस्मिया, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल एंड डायरिया वाज वेरी कॉमन. सो देयर आर सम सटल डिफरेंसेस बिटवीन वायरसेस, बट मोस्ट ऑफ देम विल हैव अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम. नेक्स्ट स्लाइड. सो इफ यू सी द वार्निंग साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको देखना है कि पेशेंट कितना सिक है, पेशेंट की कैटेगरी क्या है, पेशेंट एकदम नॉर्मल फ्लू है कि पेशेंट को कुछ इन्फेक्टेड फ्लू है कि पेशेंट को कुछ कोमॉर्बिड अलोंग विद फ्लू है. सो अगर आपके पेशेंट्स में, स्पेशली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, अगर पेशेंट्स हैव गॉट दिस tachycardia, tachypnea, some rashes, patient is not able to drink water, continuous vomiting, diarrhea, patient is very dehydrated, these are the warning signs कि आपके पेशेंट को एडमिशन लगेगी या आपके पेशेंट को मॉनिटरिंग लगेगी बहुत तेजी से या बहुत जल्दी. वही सेम थिंग एडल्ट्स में, पेशेंट हैज गॉट टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, सडनली शॉर्ट ऑफ breathness, and patient is very febrile, lose motions. These are again signs that this patient is little serious. We need to pay more attention. Probably sometimes we need to admit this patient to give maybe saline or symptomatic treatment, and sometimes antibiotics also, depending on the secondary infection. But these signs you should not miss in your OPD practice, so that you can pick up the cases who requires proper admission. Next slide. Why it is important? Because there are a lot of complications which happens in flu. चाहे वो bronchitis हो, चाहे pneumonia हो, चाहे ear infections हो, चाहे acute exacerbation of asthma, COPD हो, चाहे वो ARDS or death क्यों ना हो. So flu can range from a simple flu till death. So they have got multiple, facet to this flu where people can get admitted or can come in OPD for various reasons. Next slide. So that's why we need to treat flu. How do we treat flu? We have to give the symptomatic medicines like bed rest, ज्यादा पानी पिलाइए, बेड रेस्ट दीजिए, पैरासिटामोल दीजिए, समटाइम्स एनसेड भी देते हैं हम लोग, और समटाइम्स हम लोग सिंपल, कोई कोई घरेलू इलाज भी देता है, कोई आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह, ये सब आपको चलेगा. बट दिस इज ऑल व्हाट इज टू बी गिवन along with something called as antivirus, which is very important. So symptomatic medicines आपको देना ही है, because that will work very well. That you should give very specific medicines which are active against flu virus, which is called as antivirus. Typically what we are talking about is Oseltamivir. Next slide. So if you see treatment of antivirus drug which are available for flu, there are two types. One is a neuraminidase inhibitor and one is a adamantins or M2 ion channel blocker. अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो न्यूरामिनेडेज इनहिबिटर होते हैं वो आपके वायरल न्यूरामिनेडेज करके एक एंजाइम होता है, जो वायरस के बाहर में, उसके प्रोटीन में, उसके सरफेस पे होता है, जिसको जाके ये ड्रग ब्लॉक कर देता है. और उसको ब्लॉक करने के बाद में क्या होता है कि वायरस आपका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है. वायरस डजंट गेट मल्टीप्लाई, इट डजंट गेट प्रोपगेटेड, इट डजंट गेट ट्रांसमिटेड. तो वायरस वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, एंड आपका फ्लू कम होना शुरू होता है, आपका बुखार कम होना शुरू होता है, आपके सिम्टम्स इंप्रूव होना शुरू होते हैं. सो दिस इज द neuraminidase inhibitor, which is very specific treatment for influenza. और ये दोनों इन्फ्लुएंजा में काम करता है, ए एज वेल एज बी. एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास ऑफ ड्रग इज ओसेल्टामावीर या फ्लूवीर जो हम बोलते हैं, या ज़ेनामावीर. वही M2 एनल चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं, वो आपके वायरस की सेल के अंदर जाने के लिए कोई चैनल होता है जिसको हम M2 चैनल बोलते हैं, जिसके वजह से वायरस बॉडी के सेल में जा सकता है, उसको ब्लॉक करता है.
So that is called as M2 ion channel blocker. But the only thing is that this drugs or this class of drugs are only active against influenza A. They are not active against influenza B. And the examples are amantadine and rimetadine. But ऑफ लेट लास्ट 2-5-10 सालों से हम लोग कोई भी एमेंटाडिन और एमेंटाडिन ज्यादा यूज नहीं करते बिकॉज इट्स अ वेरी पुअर ड्रग and there is a lot of resistance to this drug. So the drug of choice as of now will be oseltamivir or Fluvic. Next slide. So if you see oseltamivir, it's a potent inhibitor of neuraminidase enzymes and it is active against both A and B influenza virus. ये प्रोड्रग होता है, बोले तो ये एक्टिव ड्रग नहीं होता है. जब आप उसको अपने बॉडी में लेते हो along with water or whatever after food, it gets converted into the active part called as oseltamivir carboxylate in the liver और फिर वो जाके आपके न्यूरामिनेटेज एंजाइम्स को ब्लॉक करता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द ओसेल्टामाविर. नेक्स्ट स्लाइड. If you see the mode of action of oseltamivir, you can see in this cartoon that in the upper half आपने देखा है आपकी एक वायरस का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर में सरफेस है और उसके ऊपर में स्पाइक्स और एरोज है और स्पाइक्स और डंबल्स है. सो जो डंबल्स है जो ऑरेंज कलर के वो है न्यूरामिनेटेज एंजाइम और जो स्पाइक्स है वो है हीमोग्लूटिन. सो हर 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 वायरस के ऊपर में या वायरस प्रोटीन के ऊपर में 18 हीमोग्लूटिन होते हैं और 11 न्यूरामिनेटेज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वायरस को हम अलग अलग नाम देते हैं, चाहे H1N1 हो, H5N1 हो. और ओसेल्टामाविर क्या करता है, इस ड्रग को ये जाके न्यूरामिनेज के जो 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 सेल्स होते हैं, जो उसके जो स्पाइक्स होते हैं या उसके जो सरफेस होता है उस पे जाके बैठ जाता है. इट ब्लॉक्स न्यूरामिनेज एंजाइम. उसके वजह से वायरस डजंट प्रोपेगेट, डजंट मल्टीप्लाई, डजंट ट्रांसमिट और वायरस वहीं के वहीं उसका प्रोजेनी खत्म हो जाता है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो इट इज अ वेरी स्पेसिफिक ड्रग अगेंस्ट फ्लू वायरस, typically both influenza A and B, and it blocks enzyme neuraminidase. Next slide. So it was the first oral neuraminidase inhibitor. It is approved in almost all the countries across the world. It is approved by FDA, CDC, everything. Next slide. So there are a lot of data to suggest that it's a very good drug. But सबसे important है इसका dose क्या है. So dose is very simple. If you are in the dose is 3 milligram per kilogram body weight और उसको आपको दो equally divide dose में आपको करना है. Example, अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसको आप 50 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, दैट मेक्स 150 मिलीग्राम. आप उसको दो इक्वल डिवाइड डोज में करोगे, दैट मीन 75 मिलीग्राम. 75 मिलीग्राम ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, तो आपने एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम में दी. 75 मिलीग्राम बीडी फॉर 5 days फॉर एडल्ट हु इज मोर देन 40+ किलो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है तो इट इज अवेलेबल इन अ सिरप फॉर्म आल्सो एंड द डोज अगेन रिमेन सेम 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम. उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना. अगर 30 किलो का बच्चा है तो उसको आप दोगे ऑलमोस्ट 90 मिलीग्राम. उसको आपको 45 सुबह 45 शाम में देना है, डिपेंडिंग ऑन द डोज है, द नंबर ऑफ milligram what is available in 5 ml of syrup. So this is very simple drug to use. Next slide. So there are a lot of clinical trials. Next slide. So what I can discuss is only one thing, that if you use antiviral properly in the early stage of the disease or as early as possible or within 2 days of infection of flu virus, it will decrease lower respiratory infection almost by half. It will decrease antibiotic use by almost 1/3 and it will decrease your hospital admission by almost half. So that is most important. So by just using simple 75 milligram BD or any kind of dose what you use for oseltamivir for 5 days, you will decrease so many things. You will decrease hospitalization, admissions, cost, and also decrease antibiotic use. That is most important. So this is how powerful drug is oseltamivir. Next slide. So if you see another data, what they say that it will decrease the severity of pneumonia. That is very important. So once you see that patient is a pneumonia because of virus infection, typically H1N1 या कोई भी flu virus है, start oseltamivir then and there only. That is most important. पॉजिटिव आने के बाद में हम लोग शुरू करते हैं बिकॉज वी नो व्हाट इज डायग्नोसिस. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ओसेल्टामाविर इज टू यूज इट एम्पिरिकली. जब आपके उसमें डायग्नोसिस या आपके पास में प्रूफ नहीं है बाय व्हाटएवर स्वैब और व्हाटएवर टेस्ट यू डू, स्टिल यू कैन यूज oseltamivir because the mechanism of action is so fast and the drug quality and the potency is so good that it will decrease whatever flu is there in your body. Next slide. So if you see the graph also, both probability and possibility of pneumonia will go down if you use early oseltamivir. Early means within first 2 days of infection, within first 2 days of symptoms, or on the same day what you see your patient. That is very important. पेशेंट को शायद पिछले 3 दिन से होगा बुखार या सर्दी, वो आपके पास में आज आया तो आपके लिए फर्स्ट डे हुआ, तो आप उसी को उसी दिन यूज करो आप. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि पेशेंट पहले 1-2 दिन खुद की दवाई लेगा, मेडिकल से दवाई लेगा, ऑनलाइन दवाई लेगा. तो जब आपके पास में आता है और आपको लग रहा है कि फ्लू सिम्टम्स है और नहीं ठीक हो रहा है, स्टार्ट oseltamivir on same day. प्लीज
start the drug on the same day. It will give you the best possible result. Next slide. So if you see guidelines, they also recommended same things, empirical treatment. आपका diagnosis चाहे positive हो, चाहे negative हो, चाहे आपने swab किया हो या नहीं किया हो. If you suspect, if there is a local epidemic, if it is a local outbreak, मोहल्ले में है, गली में है, घर में है, अगर वहां पे केसेस है और बार बार उसी एरिया से केसेस आ रहे हैं, तो यू कैन गिव एम्पिरिकल ट्रीटमेंट टू ऑल अदर फैमिली मेंबर्स, ऑल अदर localities, all other neighborhood, thinking that this is a flu which is there in that particular locality. So it can be given empirical without testing for swab also. That is most important. So it's a very simple drug regime and it is a very effective drug regime. Next slide. So an MP and empirical and early supportive therapy and monitoring is very important. So empirical भी आपको देना है तो आपको बहुत fast देना है और definitive भी देना है तो आपको fast देना है. So that is most important. Don't wait for 4-5 days कि सिम्टम नहीं जा रहे फिर हम शुरू करेंगे. अगर आपको लग रहा है कि 2 दिन में पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या पेशेंट ने 2 दिन ऑलरेडी दवाई खा ली लेकिन स्टिल उसको सर्दी खांसी बुखार है या उसको बदन दर्द हो रहा है या उसका नहीं ठीक हो रहा है फीवर, स्टार्ट एंटीवायरल. दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एंटीवायरल. It will improve the outcome of the patient. That is most important. Next slide. So, in adult with CAP positive, अगर community acquired pneumonia, which is again a H1N1 या any kind of flu illness pneumonia, obviously we will do swab and other testing, and we find that it is a positive, whatever virus is there, we have to start. There is no doubt about that. But अगर बहुत बार cases में 70% cases में नहीं भी आता है positive, still we will give empirical, give benefit of doubt to the patient. So antivirals most of the time will start as an empirical treatment. बहुत बार diagnosis नहीं होता है या sample नहीं मिलता है या diagnosis बहुत costly होता है, but the treatment is far cheaper and far easy to do rather than diagnosis. So that is most important. Next slide. So to summarize whatever we have discussed, early diagnosis, proper diagnosis, and early treatment. This is the crux of your, antivirals. That is most important. Start as soon as possible. Early. अर्ली मीन्स अर्ली, डोंट वेट टू लॉन्ग. अगर आप एंटीबायोटिक पहले शुरू कर देते हो बाद में एंटीवायरल देते हो उसका कोई सेंस नहीं बनता है. आप एंटीवायरल चालू करो, एंटीबायोटिक आप बदली बाद में दे सकते हो. प्लीज स्टार्ट एंटीवायरल्स इन अ गिवन फ्लू पेशेंट्स और गिवन अ सस्पेक्टेड फ्लू पेशेंट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट ओनली इट विल डिक्रीज द सिम्टम्स, इट विल डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन, इट विल डिक्रीज कॉस्ट, it will decrease the complications in the patients, especially in the comorbid patients. And obviously, all the societies across the world endorse what we are saying about use of empirical use of oseltamivir. So, my dear friends, whatever I want to say is a very simple that you have to use antiviral. Antibiotics are there, but antivirals are also there, and use them judiciously. Use them early. Use them whenever it is needed. Don't hold yourself back by not using antivirals because they are one of the most important drugs nowadays in practice because of the viral illness which is very much in prevalence in the society. Thank you so much. Yeah. Any questions are there, Dr. Prashant? I'm sorry, I was on mute. I'm sorry. No problem. No problem. Has the incidence of viral infection increased of late, sir? Yes, yes. Viral infections are obviously they have increased from COVID times, and they are going to keep on increasing. We are going to see newer and newer strains of influenza and other viruses also. So yes, it is increasing, and obviously because of climatic change, air quality change, pollutions, construction, so this is going to be bad for coming years. Yeah. And generally, how soon a patient is brought to the doctor? पहला तो GP के पास जाता होगा normally. Yeah. So normally it depends on patient education level and availability of the facilities. So if you go to a tier 2, tier 3 city, probably only GP will see influenza. Hardly Yeah. consultant will see because practice is like that. Correct. If you're educated people and so maybe patient might come on day 1 or day 2 also to you, as a aware citizen. But most of the time, on an average, they come to day 3 or day 4 to us. Even many times when they go to GPs, it could be day 3 of the infection. एक दो Yes, दिन yes. घर में इलाज ऐसा वैसा करके. Very, 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 very So as you possible. rightly said, that whatever day 1 you should start the treatment, whether it's day 3 of the infection, day 2 of the infection, whatever time. Yeah, yeah. That is the most important message Correct. what I want to Correct. give to Correct. people. Should oseltamivir be start empirically as the guidelines suggest?
Oh, yes, 100%. But this is one of the drug which you have to start Correct. empirically. Correct. Boss, don't wait for test. और to be honest, 90% लोगों में हम टेस्ट नहीं करते हैं ओपीडी नहीं बेसिस पे. करते, करेक्ट. 90 का 100% में नहीं करते हैं. If you are only patient gets severe, or patient comes to us late and getting admitted or getting too severe to handle, then only we search Yeah. for the diagnosis. Yeah. And of course, early initiation of treatment will definitely alter the response. But besides that, anything else which will also determine the response to oseltamivir? Yes, yes. Oseltamivir means how early you give, that is most important. Two, what are the comorbidities of the patient? His sugars and BP should be controlled. Dehydration level should be okay. We should have symptomatic treatment, good water intake, good rest, paracetamol or NSAID Correct. sometimes. Sometimes, multivitamins. All things will help together. NSAIDs can be given in this flu, no, sir? Yeah, yeah. NSAID can be given quick in and quick out, maybe 2, 3 days, not more than that. Basically, it should be paracetamol. That's always safer. Yeah, yeah, yeah. And generally, how long you administered oseltamivir? Generally, we give it for 5 days, 5, maximum 7 days, what we 7 do. days. But prophylaxis, of course, 10 days. Yeah, prophylaxis में depends कि क्या करना करें, but in very severe cases we can go up to 10 days, but 80% of our patient will respond in 5 days. 5 days. And prescribing antibiotics concurrently, I suppose, is doctor's decision finally. Yeah, I mean, we have been talking this for so many days and so many years now. The antibiotic stewardship is very important. Correct. You should not overuse, not abuse antibiotics. That is most important. And probably this is one of the drug like antiviral like oseltamivir, which will decrease the need for antibiotic in a given patient because you are treating viral. If you That's true. suspect there's a bacterial infection, if you suspect that there are some other markers of bacterial infection, you start antibiotic, no doubt about that. But just don't start just because there is a fever and cough and cold and you have to start. Don't do that. That practice is wrong. Probably antivirals are the drug of choice. So you can give concurrently antibiotics depending on your secondary infections and your, the length of infections and other factors. But most of our patients, believe me, 70% of patients will just get away with only antivirals, not antibiotics. And in your experience, how well is oseltamivir tolerated? Major side effects कुछ है? Nothing. To be very honest, last 10 years, what we have been using, it is fantastic drug. Hardly any side effect, hardly drug to drug interaction, hardly anything to do with your body metabolism and everything. So simple twice a day after meals. You might get sometimes some nausea, vomiting, which is very manageable, which anyways you get in a viral infections. Yeah. And no major contraindications or precautions. Nothing. Except if you are hypersensitivity to any Yeah. of the viral proteins and viral drugs. Otherwise, no per se contraindication. Obviously, pregnancy breastfeeding is not allowed. That is something So we all finally, know. your overall experience, which is very important to the audience. So I just want to emphasize, जो भी मुझे सुन रहे हैं आप इस बात को ध्यान में रखिए कि एंटीवायरल्स ड्रग होते हैं और बहुत बढ़िया ड्रग होते हैं, पावरफुल ड्रग होते हैं. We have to use them. Most of our patients in OPD practice at general practitioner level will be viral, not bacterial, honestly speaking. Most of them. I'm not talking 100%, but 70% of them. उस 70% में भी आपको कम से कम 70% में आपको वायरल आपको लिखना है एंटीवायरल बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर गुड रिजल्ट पेशेंट विल गेट बेटर इन 2-3 days. डोंट डिले डोंट डिले योर एंटीवायरल्स फॉर योर एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक हम डे 1 को शुरू करते हैं और एंटीवायरल हमको शायद तीसरे चौथे दिन याद आता है जब तक उसका इन्फेक्टिविटी का पीरियड निकल चुका होता है. तब तक जो वायरस ने डैमेज करना था वो कर चुका होता है. तब तक उसने और किसी 2-4 पेशेंट को इन्फेक्ट करना था वो हो चुका होता है. So don't wait for that. Start antiviral on day 1, whatever, whenever you see the patient. And if you want to use antibiotic in a given case to case basis, you can use. But don't use antibiotic left, right, and center for all your patients. But you can use antivirals, all of your patients who are supposed to be, viral, supposed to be from the same locality, supposed to be from the same seasonal variation. So this is very important. So don't forget antivirals. They are there. Kindly use it and use antibiotic judiciously. That is most important. Right, sir. Thank you very much. Thanks for sharing your experience. Because it's your experience which will give confidence to the doctors about using oseltamivir and importantly about the increasing incidence of influenza. Like today's influenza is not same as yesterday's. Today's influenza has got more, severe symptoms and the duration of severe illness is also more. So thank you so much. Thanks all the doctors who took time from the schedule and attended this webinar. Thank you, Sanjana. Thanks, Payal.
You want to speak Thank you, something sir. on Thank this? you so much. It was a wonderful presentation. Thanks a lot for taking out your time and to all the attendees